Hello everyone, warm welcome and heartiest congratulations to all of you for clearing one of the most difficult exams. I am sure it might be a surreal feeling for all of you having become a chartered accountant. Let me first introduce myself. I am Jinesh Pujani. I became a member of the institute in July 2021. Telling you about my job, I work as a consultant at KPMG in CFO advisory domain. I'll tell you about the roles and responsibilities which are involved in this particular business function. But before I go ahead with doing that, let me first give you one example. थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. समझो एक ग्रुप है. ग्रुप में एक देयर इज वन होल्डिंग कंपनी विच इज ए होल्डिंग कंपनी है. उसकी दो सब्सिडरीज है, बी और सी. अभी बी सब्सिडरी जो है उसके दो डिविजन्स है, डिवीजन वन और डिवीजन टू. और जो सी सब्सिडरी है उसके भी दो डिविजन्स हैं, लेट से डिवीजन थ्री और डिवीजन फोर. अभी ये ग्रुप है, इसमें एक इवेंट हो रहा है. समझो जो सब्सिडरी बी है उसका डिवीजन टू और सब्सिडरी सी उसका डिवीजन थ्री दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं. मतलब जो कंपनी बी है उसका डिवीजन टू इज गेटिंग मर्ज्ड विद कंपनी सी, एंड कंपनी सी जो है उसका डिवीजन थ्री इज गेटिंग मर्ज विद कंपनी बी. अभी ये जो पूरा ग्रुप लेवल पे ट्रांजेक्शन हुआ, और लेट मी टेल यू कि इसमें जो कंपनी बी है वो इंड एस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है और जो कंपनी सी है वो आई गैप रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है. अभी एट ग्रुप लेवल ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये जो इवेंट हो रहा है, उसका हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी एंड इन द बुक्स ऑफ ए. तो ये इसका इम्पैक्ट कैसे लेंगे हम बुक्स में, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन. And just to address this very question, that is one of the functions of our department, that is one of the engagements which we are involved in. कि ऐसे कोई complex business transactions हो रहे हैं between two companies, then we provide them accounting related advisory, maybe how to record the whole transaction and take the impact of that in the books of accounts. तो ये एक हो गया. इसके अलावा there is one more area which we provide assistance to clients, which is convergence from one gap to another. समझो आई गैप में एक कंपनी है, वो इन डेज में फर्स्ट टाइम अडॉप्शन करना चाह रही है. सो दैट इज़ वन एरिया विच इन विच वी सपोर्ट अवर क्लाइंट्स. उसके अलावा एक दूसरा एरिया ये भी है कि समझो एक कंपनी है, उसको दैट इज बूट स्ट्रैपिंग एंड इट वांट्स टू क्रिएट अ फाइनेंस एंड अकाउंट डिवीजन. तो उस डिवीजन को सेटअप करने के लिए ऑल्सो वी असिस्ट द क्लाइंट, कि वो जो कंपनी है उसको हम असिस्ट कर देंगे कि हाउ दे शुड बी सेटिंग अप द फाइनेंस एंड अकाउंट फंक्शन. इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग है, जैसे इंडेस 115 रेवेन्यू का हो गया, इंडेस 116 लीजेस का हो गया. तो इसका अकाउंटिंग एट टाइम्स इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स और मे बी लीज एग्रीमेंट्स एंड अकाउंट द सेम. तो इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, दैट वी असिस्ट द क्लाइंट. एंड देर आर वेरियस अदर रोल्स विच आर देयर. जैसे कि एक ये हो गया कि एक कंपनी है उसको आईपीओ लाना है. तो आईपीओ कैसे लाए, व्हाट आर द रूट्स, how exactly it should account for the IPO, what exactly procedure wise it should follow. तो वो जो हो गया उसमें भी we assist the client. तो बेसिकली if I am to summarize, जो भी CFO रहता है कंपनी का, उसको जो भी डे टू डे लाइफ में ऑपरेशंस में जो फंक्शंस होते हैं और जो ट्रांजेक्शन्स में वो डील करता है, that is where we come as a consultant and provide advisory related services. So this was about the rules and responsibilities of the function in which I am currently working. To tell you about the interview process, generally ये सारे ही बिग फोर्स में it is a common process. Maybe there are 3 rounds. एक हो गया कि तुम्हारा initially the manager would be interviewing you, he will be asking you the technical questions. Then next level होता है कि जो तुम्हारा director के साथ हो गया, एंड थर्ड लेवल होता है कि वो पार्टनर के साथ हो गया. जनरली मोर और लेस इन द बिग फोर्स दिस रिमेन्स टू बी अ कॉमन इंटरव्यू प्रोसेस. तो ये तो हो गया तुम्हारा इंटरव्यू. हाउ कैन यू एग्जैक्टली टेक द एंट्री टू दिस जॉब वुड बी वाया दिस इंटरव्यू प्रोसेस. Coming to the skills which are required and who exactly should be eyeing for taking a job in this department. So if you are a person who is very much interested in accounting related services, you are interested in maybe assisting the organizations in their finance and accounts, then this is the job for you. Also, the skills which would be required would be the technical knowledge related to Ind-AS. At times, there would be IFRS related knowledge which you will be requiring. US GAAP हो गया, सारे जो reporting framework है different, उसका knowledge is a requisite.
I understand कि as a newly qualified chartered accountant, we generally have a knowledge of IGAP and Ind AS. IFRS वगैरह it develops during the course of the job. So that is one thing. Uh, my advice to you would be that there are many non-conventional rules apart from audit and taxation, which are being offered at Big Fours, and it is generally very good emerging area which is developing at the organizations. So I definitely recommend that you can certainly eye a position in this job if you are interested. I will tell you my experience so far. It has been around 3 months since I have joined KPMG as a consultant in this function, and life has been wonderful. There hasn't been a single day in which I could not learn something new, and that is exactly something which I feel that most of the newly qualified chartered accountants would be eyeing for, the continuous professional learning. So ideally, if there is a job in which you are learning on a day-to-day basis, and the learning is such that it keeps you hooked and booked. तुम्हें ऐसा there were days, I will tell you, कि on which I was even in the non-working hours I was so much inclined टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि भाई इसका हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन, या इसका इम्पैक्ट कैसे लेंगे. तो उसके लिए आई यूज टू स्टडी वेरियस रिसर्च मटेरियल्स. So all in all, what I suggest is, if it is driving you to think in the non-working hours as well, then ideally it is a good place to be in. So I'm sure the journey for ahead is very exciting. There are various new avenues which are opening for you guys, and I would suggest that do not hurry in this process. मैंने खुद ने the exams it got over in July. The results came in September, and the whole campus process was completed by October end. I started my job in November end. So generally there would be a lot of pressure on you to start up a job. But I would say that unless you are not certain कि this is the one for you, I would suggest that you should wait, and there would be better things waiting for you. So yeah, and all the very best for all your future aspirations. I would really like to welcome you in the fraternity, and hope this video was helpful to you. Thank you very much.